Friends, welcome to our lecture series. As in the last lecture series हमने 3D रोटेशन को बड़े अच्छे से डिस्कस किया था और उसकी डिटेलिंग भी चेक करी थी क्या क्या मैट्रिक्स कैसे डिराइव करी जाती है, कैसे उसका मैट्रिक्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन द न्यूमेरिकल्स उसको कैसे डिराइव किया गया, पूरा डिस्कशन उसमें किया है. अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो यू कैन चेक आउट देयर. आप उस कॉन्सेप्ट को भी लर्न करके आइए. आज के सेशन में हम बात करेंगे रोटेशन अबाउट ए आर्बिट्री लाइन. आर्बिट्री लाइंस लाइक आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वी आर ट्राइंग टू रोटेट अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन जिसके स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और एंड कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक जो उसकी रिक्विजिट चीजें हैं जो हम परफॉर्म करने वाले हैं उसको हम स्टडी करेंगे. So let's begin the video. So in order to perform the arbitrary rotation about an arbitrary line, we have to perform some prerequisite things. Like we don't have any matrix of rotation about any other axis except x, y and z. हम लास्ट सेशन में हमने देखा था कि what we find there कि वहां पे हमने रोटेशन पता किए थे. अब कोई मैट्रिक्स अगर मुझे रोटेशन करना है दैट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, बोथ मैट्रिक्स आर देयर अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस. अब क्वेश्चन इज दैट कि इस पर्टिकुलर लाइन जिसके जो एक आर्बिट्री लाइन है जिसकी कुछ डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको उसके अराउंड अगर मुझे रोटेशन परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to reduce our problem to the previously existing problem. जैसा कि हम लोग ने algorithms में स्टडी किया है पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल वाले कॉन्सेप्ट में कि हम कैसे अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को प्रीवियसली सॉल्व प्रॉब्लम में रिड्यूस करते हैं. सिमिलरली हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे. What exactly we have to do? We have to first reduce our case into the previous case. इसमें rotation is about x-axis, y-axis and z-axis. So let's begin the lecture. The first step which we are going to perform, we are going to translate the arbitrary axis so that it can pass through the origin. So translate means changing the positioning. So हमें अपने पर्टिकुलर लाइन को इस तरीके से ट्रांसलेट करना है so that its one point reach to the origin as shown in the figure. So आप यहाँ पे देख सकते हैं, you can able to see that thing x y z will become 0 0 0 in this particular case. After doing this operation, now what we have to do, we have to rotate this particular arbitrary axis line in some plane. That can be zy, that can be yx, that can be xz plane, in any plane. In my derivation I am doing the rotation about x-axis so that this line can come under xz plane. So perform the rotation about x-axis until the arbitrary axis completely lies in the xz plane. So after performing the rotation in xz plane, now you can able to see in this particular diagram the line is lying somewhere, and if I perform the rotation it comes in xz plane. Now what we have to do, now we are going to perform the rotation in y direction so that this line can become parallel to the z axis. As you can able to see here, है ना, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, बड़े ही अच्छे तरीके से इसमें चीजें डिराइव की हुई है. See this line after doing rotation it comes in this plane, that is your xz plane. Now in order to make this line and this line parallel, how you have to rotate? You have to rotate in this manner. अब इसको ऐसे rotate करेंगे. So what we have to do next, we want the arbitrary axis to match to the coordinate of axis जो जिसकी matrix हमारे पास already lie करती है ना. We have a matrix to rotate about z axis, x axis and y axis, but not have a matrix now that we have to compute. So we rotate about y axis. हम इसको y axis के अराउंड रोटेशन परफॉर्म करेंगे so that क्या हो सके, that line will become parallel to the
z axis, and after doing that thing आप जानते हैं कि we have a matrix to rotate. Now after completing all those things, what we find here, now we have to perform the rotation in the reverse direction so that we can reach to the previous state. But make sure of that thing, you have to make sure of that thing कि we should not perform the reverse rotation about z axis, because it is the rotation about arbitrary axis and not the z axis. So final sequence which we get, we translate, then we rotate about x-axis, then we rotate about y-axis, then we rotate about z-axis, which is basically rotation about arbitrary axis. We are not reversing this rotation because वो हमारा rotation किसके aspect में है? It is rotation about arbitrary axis. So we reverse the previous one, ry1, then rx1, then translate back. So overall, what we get here is a composite transformation. So what we did first, हमने उसपे जो भी पॉइंट था, द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन, उसको हम ओरिजिन पर लेके आए, देन उसे एक किसी पर्टिकुलर प्लेन एक्स वाई वाई जेड व्हाटएवर, मेरे केस में वो कौन सा प्लेन था, दैट इज व्हिच प्लेन इज दैट वन, दैट इज एक्स जेड प्लेन, मैं उसे एक्स जेड प्लेन में रोटेट करके लेके आया. देन आफ्टर दैट व्हाट वी डिड, हमने उसे एक एक्सिस मींस मेरे केस में जेड एक्सिस थी जिसके पैरेलल हमने उसको परफॉर्म. सो आफ्टर डूइंग ऑल दोस थिंग्स, रोटेशन परफॉर्म किया, देन सारे जितने भी मैंने चेंजेस किए थे उनको रिवर्ट बैक किया, और फाइनली वी कम टू द सिचुएशन जिसमें हमने रोटेशन परफॉर्म किया अबाउट ए आर्बिट्ररी एक्सिस, एंड दिस कंप्लीट मैट्रिक्स इज द रोटेशन मैट्रिक्स फॉर performing the rotation about arbitrary axis. So hope so you get the concept of rotation about a arbitrary line. The mathematical computation of this particular rotation is performed in second part. So don't forget to visit the second part of arbitrary rotation, and that we computed the mathematical portion here because the video is becoming so large. Hope so आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. Thanks for watching our videos and don't forget to subscribe. Thank you.